Dear students, this is Imran Kazmi and here is your lecture 6 of Programming Fundamental. In the previous lecture, I have given you some of the assignments. The given assignments are here. The first assignment is write a program that input number of weeks, day and display the name of the day. For example, if user enters 1, it display Friday and so on, or you can enter any number and accordingly the day must be displayed. So I have given you 4 assignments. Hopefully you have done this. I have attempted these assignments for you people so that you can compare your program with me, and if there is an error then you can fix that error. Again, लॉजिक आपकी जो है वो एक दूसरे से डिफ़र कर सकती है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन मस्ट बी द सेम. Let's go for the first assignment. So this was the assignment. Enter number. User enter a number, an integer number. There is a switch statement on that number. User has to enter a number ranges from 1 to 7. So if the value of A is 1, the first case is true and Monday would be displayed. And the next statement is break. Break means when the case 1 gets true, the relevant statement would get executed, and after that you do not need to check further cases. To exit from the switch statement, we would go for the break statement. If the case 1 is not true, or you can say the value of A doesn't match the value of the case, so the second case would be checked. So if this case gets true, the result would be Tuesday, and break would simply break the switch statement, mean no need to go for the further cases. But if this condition gets false, you would go for the case 3, and if the value of A matches the case 3, then Wednesday would be displayed, and the break statement would break the switch statement and no need to go for the case 4. In this way, all the cases would be checked: 1, 2, 3, 4. Similarly, 5, then 6 and 7. If none of the case matches the number, then we would go for the default. Default would act like an else statement and wrong number would be displayed. Here break statement is used to break the switch statement. Whenever the break statement get executed, then further cases would not be checked. तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी वहाँ पे फर्दर केसेस जो है वो चेक नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल केस 1 if gets true, the statement would be executed relevant to the case 1, and break statement mean you do not need to go for the further cases. Right over here, the break statement, the switch statement gets break and further cases would not be checked. Let's run it. Enter number ranges from 1 to 7. Let's say we enter 4. Thursday would be displayed. Let's say we enter 1. Monday would be displayed. Let's say we enter 7. Sunday would be displayed. Let's say we enter 8. That is not given in the range. Then it would display the wrong number entered. It means that is the default statement has worked,
and none of the case gets true, so the control transfer to default statement, and after default there is no need of break because it is already going to be the end of switch statement. So in this way your first assignment was enter a number and print the relevant day of the week, and in case the wrong number is entered or other than 7 number is entered, then it would display the wrong number. Let's go for the next assignment. So this was the second one. You have to enter two numbers A and B and a choice. दो नंबर इनपुट करें और एक चॉइस इनपुट करें, और चॉइस के बिहाफ पे कंप्यूटर ये डिसाइड करे कि इन दो नंबर्स के साथ कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर चॉइस की वैल्यू प्लस आप देंगे तो दो नंबर्स जो है वो ऐड होंगे, अगर चॉइस की वैल्यू माइनस देंगे तो दो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर आप चॉइस की वैल्यू जो है वो स्टैरिक एंटर करेंगे तो दो नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, और अगर स्लैश एंटर करेंगे तो दो नंबर्स जो है वो डिवाइड होंगे। और इन केस कि आप इन सिंबल्स के अलावा कोई और सिंबल एंटर करेंगे चॉइस की वैल्यू के तौर पे, तो वो फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, रॉन्ग ऑप्शन का मैसेज आएगा, और चॉइस की वैल्यू और सी की वैल्यू जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन की वैल्यू, चूँकि रिजल्ट जो है वो सी में जाना है तो सी की वैल्यू 0 सस्टेन रहेगी। सो इफ़ द accurate choice has been entered, then the relevant operation would be performed, but if the choice is not accurate other than plus, minus, multiplication and division, then the result would not be displayed and the C and the value of C would remain 0. Let's run it. Two numbers 12, 10. First let's go for plus. The result is 22. 10 plus 22. Again two numbers. Let's go for minus. The calculated value is 5. Two numbers. Any two numbers. Let's have static over here. The result would be multiplication of two numbers. Again now we enter slash. Okay, over here we have some different choice. We have another option selected, wrong choice entered, the value is true but the choice is there. So there, let's check it why this happen. Yes, we should have break over here. And now you will check the result is slash. Now the result is okay. We have left break over there, so the result is fine. So let's enter again. But now we do not enter the relevant choice, plus, minus, asterisk, slash. We would enter another symbol rather than these four given symbols. Let's say we enter and sign. So you have entered a wrong choice and calculated value is 0 because for AND operator it wouldn't calculate any of the value and the value of C would remain 0 as it was initialized at the beginning of the program. So we have case plus, we have case minus, case asterisk, case slash. So as we have done in the previous example, when the case plus matches the choice, the result would be from this statement
plus a plus b equal to c, and break mean you will get out of the switch statement and you no need to check the further cases. But if the first case gets false, the second case is checked, and if it is true or it matches the choice, then c is equal to a minus b, and break mean you won't go for the next case, rather you would get out of the switch statement. And if again this case gets false, you would check this one and the relevant statement would be executed, and if this case gets false, then you would check this one, and c would be calculated through a is equal to c is equal to a minus b, and break would get out of the switch statement. And if none of the case gets true, then we would enter in the default statement and wrong choice would be displayed. So this is the end of the switch statement, and then the value of c would be displayed whatever the value of c is calculated. Either it gets from case plus, case minus, case array, case slash, whatever the value of c, that would be displayed. But if none of the case gets true, then the value of c remains 0, mean you have not calculated the value of c, rather you are in the default position and the value of c remains 0. But if some of the case gets true, then the relevant value of the c would be displayed. Let's go to the next assignment. So this was quite simple assignment. इसमें आपने 3 एंगल्स की वैल्यूज़ जो है वो एंटर करनी थी और उसके बाद चेक करना था कि आपने एक वैलिड ट्राइंगल जो है वो प्रोड्यूस हुई है या इनवैलिड ट्राइंगल प्रोड्यूस हुई है, और इसमें जो कंडीशन थी दैट वाज फॉर द वैलिडिटी ऑफ द वैलिड ट्राइंगल, एक्चुअली द सम ऑफ एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180. अगर हमारा सम ऑफ एंगल लेसर देन और ग्रेटर देन 180 हो जाता है, तो इन दैट केस द ट्राइंगल वुड बी इनवैलिड. बट फॉर वैलिड ट्राइंगल द सम ऑफ एंगल्स शुड बी equal to 180, neither less than nor greater than 180, rather exactly 180, then the triangle is valid. So you have to enter the angles, 3 angles, and the sum must be calculated to check whether the triangle is valid or not. Let's run it. 3 angles. Let's say we have entered 60, 60, 60. The triangle is valid, mean the sum of these three angles is equal to 180, so that's why the triangle is valid. So no need to have same values of angles, we can change the values. Let's say the first angle is 20, the other angle is 60, the next angle is, let's say, 100. The triangle is again valid because the sum of triangle is 180. Let's say we run it again. We have 60, 60 and 61. This time the sum of angle is 181 and the triangle is invalid. So whenever the sum of the angle is lesser than or greater than 180, the triangle would be invalid. But if the sum of the angles is equal to 180, the triangle would be valid triangle. Let's go for the next assignment. So this assignment was relevant to mathematical equation, quadratic equation. Quadratic equations, we have 3 cases. Like if we have a quadratic equation and the value of constants a, b and c is given, so we have 3 different cases for the quadratic equation.
Over here I have entered the value of A, B and C. These inputs are taken from the user. So I have calculated Z. Z is equal to B square minus 4AC. So we have three cases. If B square is minus 4AC greater than 0, we have an option. We have a case. If B square minus 4AC lesser than 0, we have another case. If B square minus 4AC equal to 0, we have another case. So for the quadratic equation we have three cases: b square minus 4ac greater than, lesser than and equal to 0. So rather than writing b square minus 4ac again and again, I have calculated the value of b square minus 4ac and the value is placed in the variable z. So whenever z would be there, it means that b square minus 4ac would be there. So first case, if z greater than 0, then we would go for two values x1 is equal to minus b plus b square minus 4ac स्क्वायर रूट होता है, तो उसके लिए z यूज़ किया है, तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac square root divided by 2a, and similarly x2 is equal to minus b minus. So the only difference between the value of x1 and x2 is that over here we have plus, so the first value would come through plus and the second value, the value of x2 would come through minus. So the value of x1 and x2 would be displayed through the cout statement. In the next case, obviously, else if z or z equal to 0, then either plus z or minus z doesn't matter, so no need to calculate the square root. Rather we would go for x is equal to minus b divided by 2 multiply a, and we wouldn't calculate square root because the square root of 0 is nothing, is equal to 0. So no need to calculate the square root of 0. Only one root would be calculated and the value of x would be calculated. So no two values. Rather than two values, plus and minus, we simply calculate only one value, and that value would be displayed. In the third case, if both of the cases gets false, mean ना ही z की वैल्यू अगर greater than 0 होती है, neither equal to 0 होती है, then the third case is it must be lesser than 0. So in case of the value of z is lesser than 0, then the roots are imaginary, आयोटा के ज़रिए कैलकुलेट होंगे, और हम यहाँ पे वो ऑप्शन कैलकुलेशन वाली आयोटा वाली नहीं कर रहे. हमने तीनों केसेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं. अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर दो रूट आएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ. अगर इक्वल टू 0 है तो फिर एक ही रूट आएगा, वो माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a, ओनली सिंपल वन वैल्यू. And if both of these cases gets false, then control goes to else and roots are imaginary would be displayed. So यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया गया है SQRT, और ये मैथ्स का आपका फंक्शन है स्क्वायर रूट का. इसके लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी maths.h, क्योंकि स्क्वायर रूट का फंक्शन जो है वो इस maths.h में मौजूद है. अगर आप स्क्वायर रूट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे आपको math.h जो है वो हेडर फाइल मस्ट है इंक्लूड करनी. लेट्स रन इट. द वैल्यू ऑफ a, let's say the value of a is 2, the value of b is 4, the value of c is 1. So we would have two roots, x1 and x2. Let's run it again. Value of a 4, value of b 2, value of c again 4. So in this case roots are imaginary because b square minus 4ac is lesser than 0, and for lesser than 0 there is no value of square root, and imaginary roots would be calculated. Let's go for the another case. 4,
2, 1. Again roots are imaginary. When b square minus 4ac is equal to 0, there only one case is there, mean only one value would be calculated, only one root would be there, and that is the value of x. So in this way we have three cases: b square minus 4ac greater than 0, b square minus 4ac equal to 0, b square minus 4ac lesser than 0, and the relevant values would be calculated. So dear student, these were the assignments. Let's go toward the actual task, today's task. So these were the assignments. Yes, today we are going to start the second part of control instruction. Loop control instruction we are going to start. What is loop control instruction? Computer has the ability to perform a set of instructions repeatedly. This involves repeating some portion of the program either a specified number of times or until a particular condition is being satisfied. This repetition operation is done through a loop control instruction. लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बेसिकली आपकी रिपीटिशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, और जब भी आपको किसी प्रोग्राम में रिपीटिशन की ज़रूरत पड़ती है तो रिपीटिशन के लिए आप लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आइदर आप फिक्स्ड रिपीटिशन की तरफ जाते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम की तरफ, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक एक रिपीटिशन की तरफ जाते हैं. अगर आप फिक्स की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि शुरू में ही आप डिफ़ाइन कर देंगे कि लूप या रिपीटिशन आपकी 10 टाइम्स होनी चाहिए, 20 टाइम्स होनी चाहिए. लेकिन अगर आप किसी सेटिस्फाई कंडीशन की तरफ जाते हैं तो उसमें यह है कि जी अनटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड रिपीटिशन वुड गोज ऑन. सो कंप्यूटर्स में आपकी जो स्टेटमेंट्स या जो आपका पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आप चाहते हैं कि वो रिपीट हो, और रिपीटिशन के लिए फिर आप जो है वो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वो इस्तेमाल करें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सम में एक वेरिएबल है एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. Let's say you have done this, but if you have to go up to 100, what will happen? The same thing you are going to do for the 100 times. So अगर एक चीज़ रिपीट हो रही है जस्ट विद अ सिंगल इंक्रीमेंट, तो रादर देन आप उसको इतनी बड़ी एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे ले जाएं, वाई नॉट कि आप उसमें रिपीटिशन को वाया लूप जो है वो कंट्रोल करें, जिससे रिज़ल्ट आपका जो है वो एक सिंपल वे से कैलकुलेट हो जाएगा. तो इसमें देखें कि नंबर आपका जो है वो एक एक इंक्रीमेंट के साथ प्लस होता जा रहा है, आपकी एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है और 10 टाइम्स, और अगर 10 टाइम आप करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो अगर 100 टाइम आपको करना पड़ जाए तो फिर ये स्टेटमेंट्स की क्या सूरत हाल बनेगी, और अगर इसे 1000 टाइम करना पड़ जाए तो सो इट वुड गो बियॉन्ड योर लिमिटेशन. सो दिस इज़ नॉट अ बेटर वे. हमें इस तरह से स्टेटमेंट को नहीं करना कि जहाँ पे रिपीटिशन हो तो हम उन्हीं स्टेटमेंट्स को बार बार लिखते रहें. So to avoid the repetition of statement, we use simply loop statement. So this is not the better way of doing programming. We would go for the loop to avoid this sort of repetition. Let's have a flow chart of loop control instructions. In the beginning, we take from start, initial value, test condition, true or false,
देन बॉडी ऑफ द लूप, इंक्रीमेंट, स्टॉप। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि आपकी जो लूप होती है बेसिकली इसके तीन पार्ट आपके एसेंशियल पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, द सेकंड वन इज कॉल्ड कंडीशन एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब आप बिगनिंग में सबसे पहले स्टार्ट में आ जाएं, उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं, तो किसी वेरिएबल की वैल्यू, लेट से वेरिएबल की वैल्यू x है, तो उसके अगेंस्ट कंडीशन जो है वो चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होने की सूरत में बॉडी ऑफ द लूप एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और उसके बाद अगेन कंडीशन जो है वो चेक होगी। सो अंटिल द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, the body of the loop would get executed and the increment and decrement of the variable would occur and the condition is again checked. So this process goes on: test condition, body of the loop, increment or decrement, then again test condition. So जब तक आपकी टेस्ट कंडीशन ट्रू है तब तक बॉडी ऑफ द लूप और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो आपका होता रहेगा और बार बार कंडीशन आपकी चेक होती रहेगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने की सूरत में आपका कंट्रोल जो है वो बॉडी ऑफ द लूप की तरफ नहीं आएगा, बल्कि आपका कंट्रोल जो है वो स्टॉप की तरफ चला जाएगा, लूप आपकी रुक जाएगी। सो इनिशियल वैल्यू के बाद आपकी कंडीशन चेक होगी, और जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, टेस्ट कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, आपकी बॉडी ऑफ द लूप मीन उसमें जो आपकी बॉडी है, लूप की जो बॉडी है, उसमें जो स्टेटमेंट मौजूद हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर स्टॉप हो जाएगा। अब इसमें यह है कि अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल वुडंट एंटर द बॉडी ऑफ द लूप, it would go toward stop. But if the condition is true, then in true case it would go toward body of the loop and increment and decrement. तो यहाँ पे मैं बार बार ये क्लियर कर रहा हूँ कि ट्रू होने की सूरत में बॉडी ऑफ द लूप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगेन टेस्ट कंडीशन। तो जब तक ये ट्रू रहेगा तो साइकिल जो है वो टेस्ट, बॉडी ऑफ द लूप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशंस में चलता रहेगा। लेकिन जब टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स होने की सूरत में कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी से बाहर स्टॉप की तरफ चला जाएगा, और अगर आपका कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है तो फिर कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप में एंटर नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। So total dependent of the loop is based on test condition. So the condition is true, the body would be executed, and if the condition is false, control would go towards stop statement. Stop mean you would go toward the end of the loop. Either we are doing programming through Java or C++, we have three basic loops: while loop, for loop and do while loop. We have three basic loops that would be used for the repetition of the statements. While loop, while loop का जनरल सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, then while, logical expression, sometime called test condition, then body of the loop, और body of the loop में do this and this mean the statements you want to repeat, and then the change value of the expression mean that either you increment the value or you decrement the value and the value of the expression on which the condition is being tested. So three components or parts of the loop are very much important: the initialization, logical expression and change value of the expression. तो ये बिल्कुल जो है वो इसी तरह से फ्लो चार्ट की तरह काम करेगी। ये वाला फ्लो चार्ट, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप, इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखें कि इनिशियलाइजेशन और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है, लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर ट्रू है, तो ट्रू होने की सूरत में कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप में एंटर होगा, और बॉडी से मुराद ये पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस में आने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली द बॉडी ऑफ द लूप। तो अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो जाता है तो ट्रू होने की सूरत में
do this means statement 1, statement 2, statement 3, then change in value, either increment or decrement of the value, then again condition is checked. If the condition is again true, again control enter in the body of the loop, again statement would be executed. So this repetition goes on until the condition is true. But when the condition gets false, control transfer to the next statement after the loop. So if even the first time the condition gets false, logical expression gets false, control would not enter in the body of the loop, rather control would go after the next statement of the body of the loop. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वही एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने रखी है, जिसमें नंबर जो है वो 1 to 10 ऐड करने हैं। तो चूंकि इसमें नंबर जो है वो 1 to 10 रिपीट हो रहे हैं विद सिंपल 1 इंक्रीमेंट, तो इनिशियलाइजेशन में नंबर इक्वल टू 1 मीन यहाँ पे मैंने नंबर को 1 पे इनिशियलाइज किया है, और टेस्ट कंडीशन क्या है, number is lesser than equal to 10. So until the number is lesser than equal to 10, the statements would be executed, would remain in execution, repetition would goes on if the condition is true. So first time the number is 1, the condition is true, control enter in the body of the loop where sum is equal to sum plus number, मीन सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 सम 1 हो जाएगा, एंड देन नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, नंबर में भी एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, नंबर पहले 1 है तो अब नया नंबर की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो 2 होगी। अब जब एक्सप्रेशन चेक होगा तो नंबर की वैल्यू 2 के लिए कंडीशन चेक की जाएगी। इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू, then control again enter in the body of the loop, again sum would be calculated, again number would be calculated. This time the number is 3, 2 plus 1, the number would get 3, so the expression would be checked for the value 3. The expression is again true because number is again still lesser than equal to 10. So again control enter in the loop, again sum would be calculated, and again the new number would be calculated, that would be number equal to number plus 1, mean 3 plus 1, that would be 4. So the loop would be checked for 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9 and 10. Up to 10 the condition is true, and the sum and numbers are repeatedly being executed. So when the number gets 11, then the expression becomes false. And when the test condition becomes false, the control wouldn't enter the body of the loop, rather it would go to the next statement after the body of the loop. So the next statement after the body of the loop is cout statement. So while loop this time would run for 10 times, 10 time repetition would be there, and after 10 times when the value of number becomes 11, the control wouldn't enter the body of the loop, rather it would go to the next statement after the body of the loop, and the next statement is sum of फर्स्ट सॉरी यहाँ पे 1000 इंटीजर लिखा हुआ है, जबकि ये 10 इंटीजर्स का जो है वो सम कर रहा है। सो ये करेक्शन कर लें कि ये 1000 इंटीजर्स नहीं है, फर्स्ट 10 इंटीजर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज, तो जो भी आप सम कैलकुलेट करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये करेक्शन इधर कर लें, ये 1000 नहीं है, ये फर्स्ट 10 इंटीजर्स का सम जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, और जो सम फर्स्ट 10 इंटीजर का बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, जो भी ये सम बनेगा वो सम आपका जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट 10 की बजाय फर्स्ट 100 भी कर सकते हैं, जस्ट एक्सप्रेशन में लेसर दैन इक्वल टू 100 कर दें, आप 1000 भी कर सकते हैं। तो लूप में बस 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, और आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या है। बाकी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो रिपीट होती रहेगी। So dear student, this was the beginning of the loop control structure. Hopefully you have taken some of the points and
आपको इसकी कुछ समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी मिसिंग रह गई थी वो ये थी कि लास्ट टाइम हमने जावा में, हम आपको पता है कि जी जो भी प्रोग्राम हम करते हैं तो हम उसको साथ साथ जावा में भी जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंटैक्स हर जगह पे सेम है। जावा में भी आप लूप्स इसी तरह से लगाएंगे, स्विच स्टेटमेंट्स भी इसी तरह से लगाएंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप, मैंने कोई नहीं कहा कि जी ये सी प्लस प्लस में है या जावा में है, तो आप यही सेम चीज़ जो है वो जावा में भी जो है वो कर सकते हैं। उसमें भी सेम वाइल, फॉर और डू वाइल का स्ट्रक्चर है। आप सी प्लस प्लस में करें या जावा में करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक असाइनमेंट हमारी जो है वो जावा की रह गई थी, उसको डिस्कस करना था। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सी प्लस प्लस में की है, यही हम जावा में भी करने जा रहे हैं। अगेन ये देखें कि हमने एक इंटीजर वैल्यू ली a और फिर दूसरी इंटीजर वैल्यू ली b एंड अगेन वी हैव थर्ड इंटीजर वैल्यू c। तो तीन वैल्यूज़ हमने एंटर की, a b और c। उसी तरह से आप पहले उसे स्ट्रिंग लेते हैं रीड लाइन के फंक्शन से, फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पारसेंट लगाते हैं। तो पहले आप जो है वो एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और फिर इंटीजर डॉट पारसेंट लगा के उस स्ट्रिंग को प्रॉपर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने तीन नंबर ए बी और सी पहले हमने स्ट्रिंग ली है और फिर उनको ए बी और सी तीनों को तीन इंटीजर्स में कन्वर्ट किया। तो अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो आ चुकी हुई हैं। अब यहाँ से वही तरीकाकार जो आपने जावा में किया था, वही आप जेड सी प्लस प्लस में किया था, वैसे ही हम इधर भी करेंगे। हम सबसे पहले जी कैलकुलेट कर लेंगे, बी स्क्र माइनस फोर ए सी, ताकि हमें बार बार जो है वो बी स्क्र माइनस फोर ए सी जो है वो कैलकुलेट ना करना पड़े। तो इफ़ z इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यहाँ पे वही हमारे तीन केसेस, इफ़ सी z इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, इफ़ z इक्वल टू ज़ीरो एंड इफ़ z लेसर दैन ज़ीरो। तो तीनों केसेस हैं, एग्जैक्टली सेम कोडिंग है, कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट आपका जो है वो सिंटैक्स का थोड़ा बहुत डिफरेंट। तो अगर इफ z इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन x1 एंड x2 वुड बी कैलकुलेटेड। और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन अप्लाई करने के लिए अलहदा से हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है मैथ डॉट एच, बल्कि आप स्क्वायर रूट के फंक्शन के लिए मैथ डॉट एस क्यू आर टी लिख दें तो आपका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अलहदा से जो है वो मैथ डॉट एच करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे मैथ डॉट स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो आपके x1 जो है वो प्लस के साथ कैलकुलेट होगा, x2 जो है वो माइनस के साथ कैलकुलेट होगा, और दो रूट आपके कैलकुलेट होंगे x1 और x2 अगर z की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है। इन केस ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, देन कंट्रोल गो टू वर्ड एल्स, and else if we have another condition, and the condition is that if z equal to 0, in this case you do not need to calculate plus 0 or minus 0, only one root would be calculated, and that is minus b divided by 2a, and only one value would be there. So if even this condition gets false, you go toward the last else and roots would be imaginary. So we have three cases: z greater than 0, two values would be calculated, two roots would be there, x1 and x2 for this case, and if this case is false, control move toward this case, and if z equal to 0, then we have only one root, and that is the value of x, and if this condition gets false, control goes toward this else, and the last else is there if the roots are imaginary when the value of z is lesser than 0. So if z greater than 0, दो रूट्स आएंगे हमारे पास x1 और x2। अगर z इक्वल टू ज़ीरो है फिर एक रूट आएगा, और अगर z जो है वो आपकी नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल रादर द वैल्यू ऑफ z इज लेसर देन 0, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। The value of a, the value of b, value of c,
दो रूट्स आपके पास आए हैं x1 और x2 because the b square minus 4ac would be greater than 0 and when the value of b square minus 4ac is greater than 0 two roots would be calculated. Thank you very much. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे. लूप को हमने स्टार्ट किया हुआ है तो आप लूप पे फोकस करें, इसकी प्रैक्टिस करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वाइल लूप को फर्दर डेप्थ के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको C++ के साथ जावा भी जो है वो करवाऊं ताकि आप अगर दोनों लैंग्वेजेस को पैरेलल लेके चलना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं है. अगर आप जावा में काम कर रहे हैं तो सेम सिंटैक्स है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपके साथ साथ जावा की भी एग्ज़ाम्पल जो है वो करवा देता हूँ, C++ की एग्ज़ाम्पल भी करवा देता हूँ. तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिससे मर्ज़ी जो है वो करना चाहें आप कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.